Okay, so it's day 34 and today we'll be solving this number of subarrays that match a pattern, the second part of that. So this would be a short video, like you would realize that later why, because it's a direct implementation of a certain algorithm. So what the question says is, like I would just explain to you what the question says. So suppose you have this nums 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also this problem was in a recent contest, the recent weekly contest, so that's why I picked this. So if there's a number called 1, you are basically given an array 1 2 3 4 5 6, and you're given a pattern 1 comma 1. So what 1 indicates, that if you look at over here, there are only three things that can be in pattern: 1 0 or minus 1. What 1 indicates that if there are two numbers, the second number should be greater than the first number, and 0 indicates that the number should be equal, the adjacent number should be equal, and minus 1 represents that the number next to me should be smaller than me. So if the pattern is 1 and 1, if you see, it actually needs three numbers, and it should be a strictly increasing, like it should be strictly increasing. And similarly, if the pattern is 1 0, like, okay, I'll just explain this to you how this works. So suppose this is your number, right? This is your number 144 13553. So you would start iterating and you would create basically a pattern data. So how the pattern data works is, so suppose यहाँ पे 1 is smaller than 4, so that means it's an increasing format, right? So यहाँ पे you will get a 1. Again, the numbers are equal, so यहाँ पे you would get a 0. It's in decreasing order, 4 and 1 you would get a minus 1. 1 and 3 increasing order, you would get a 1. 3 and 5 again increasing, 1. 5 and 5 equals, that is 0. 5 and 3 decreasing, you get a minus 1. समझ गया राइट कि मैंने किसको क्या असाइन किया है. 1 और 4 इंक्रीजिंग था, दैट्स वाई 1. 4 4 वाज इक्वल, दैट्स वाई 0. 4 एंड 1 डिक्रीजिंग, माइनस 1. इंक्रीजिंग 1 डिक्रीज, अगेन इंक्रीजिंग 1 इक्वल्स 0 एंड डिक्रीजिंग माइनस 1. नाउ तुम्हें बोला है, यू आर बेसिकली गिवन टू थिंग्स, फाइंड दिस पैटर्न 1 0 minus 1. Now if you just simply go into this array and you would find 1 0 minus 1, you would find this 1 0 minus 1 and again this 1 0 minus 1. ठीक है. So that's the whole question. Once you make this pattern data, all you have to do is find instances of these patterns in this particular pattern data. ये जो तुम्हें pattern data दिया है. Now the question comes, how do you do that? Because time complexity ये नहीं है कि तुम ऐसे ही brute force लगा दोगे. Time, you are not given that much of time. So how do you solve this? You use basic string matching algorithms. So what do we do in string matching algorithms? Suppose you are given two things, a b c, a b c, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हें दिया है, एंड यू आर टोल्ड टू फाइंड द इंस्टेंसेस ऑफ ए बी. सो तुम वो कैसे यूज़ करोगे, लाइक हाउ वुड यू डू दैट एफिशिएंटली? ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, राइट? क्योंकि तुम्हें सब स्ट्रिंग मैचिंग करनी है एंड तुम्हें लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर करना है, बिग ओ एन या जो भी तुम्हें यूज़ करना है एफिशिएंट टाइम के अंदर, यू हैव टू डू दैट. So how do you do that? I would suggest go ahead and read this algorithm, because as this is a hard problem, and if you're solving hard problems, you need to be aware of these concepts: KMP algorithm, Z algorithm, how the LPS thing works. That's why I won't be explaining those in my video here, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा video, and these people have explained it way better than me. तो ये पढ़ना, then if you really want to look at the implementation and how things work, you can just look at the implementation एक बार यहाँ पे बताया भी है what is tricky. I think this is the tricky part, जो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, but try it with this example. So हाँ, just learn what is LPS, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स में यूज़ होने वाला है. क्योंकि इसका एक्चुअल बैक एंड लॉजिक सिंपल है, इतना टफ नहीं है. Then also go ahead and just learn Z algorithm also. Then you can run that same generic flow. So basically once you have learned KMP, उसके बहुत तरीके हैं. नाउ वी हैव यूज्ड KMP टू गेट दी अकरेंसेस. ये देखो, बेसिकली अगर पैटर्न साइज मेरा मैच हो जाता है तो आई जस्ट डू एन अकर प्लस प्लस. ये तो मैं अभी नहीं समझेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड हाउ KMP वर्क्स, यू कैन यूज़ इट इन मैनी फॉर्मेट्स. स्ट्रक्चर सेम ही होता है LPS और KMP का, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट. सो हाँ, इन दी एंड इफ़ यू सी, मैंने जैसे ही पैटर्न डेटा निकाला, मेरे को पता चल गया ये मेरा स्ट्रिंग जैसा है जहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न ढूंढना है, एंड ये मेरा पैटर्न है जो मुझे उस पर्टिकुलर उसमें सर्च करना है. ये मुझे सर्च करना है. वंस यू हैव दी, लाइक ये दो अरेज तुम्हारे पास है, तुमने ये फिगर आउट कर लिया ये कैसे बनेगा, एंड तुम्हें उसमें क्या सर्च करना है, यू कैन ईजिली अप्लाई KMP टू फाइंड दिस पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी. सो दैट्स इट. अगर तुम्हें KMP नहीं समझा, जस्ट पुट इट इन दी कमेंट्स, मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा था मुझे भी ये वाला पार्ट समझने में. सो अगर लाइक इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड, देन लेट मी नो.
And that's all for today's video. Bye bye.